you understood about production activity. Okay, now in Palampur the main production activity is farming. Now let us know कि पालमपुर में जो फार्मिंग होती है उसमें क्या क्या होता है. सो हियर वी आर गोइंग टू ओनली टॉक अबाउट व्हाट हैपन्स इन पालमपुर. ओके, सो इन पालमपुर द लैंड विच इज़ यूज्ड इन फार्मिंग इज़ फिक्स्ड. फिक्स्ड का मतलब कि कुछ सालों से लैंड जिसमें कि फार्मिंग की जाती है वो एक्सपैंड नहीं हुआ है. आई मीन द अमाउंट ऑफ लैंड अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन इज़ फिक्स्ड इन पालमपुर. उसी लैंड पर फार्मिंग होती है. सो लैंड इज़ फिक्स्ड. दैट मीन्स इट इज़ द सिंस इट इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर. Almost 75% of people are dependent on farming. Okay, they are working either as farmers in their own land or they are working as farm laborers. Farm laborers matlab those people who work in the farms of other big farmers. Okay, they are farm laborers. Okay, so they work either as farmers or as farm laborers. Okay, and that's how they earn their money. Then the land area which is under cultivation, I mean where crops are grown. Under cultivation matlab the land area where crops are grown, it is fixed. Okay, there is no scope of expansion of any land area under cultivation because even if there was some wasteland which was available, okay, so that also got converted into cultivation area. So now there is no amount of land which is left which can be expanded further so that the farming activity, farming percentage can be increased. So this is the scenario of land in Palampur. That brings me an important question to you. Please find out what is the standard unit of measuring land. I mean when we talk about farming, तो generally farmers अपने land का measurement किस standard unit में करते हैं? You need to tell me about this. Okay. Now second, there is a very important question which now when I say that the land is fixed, then brings me a very important question that can we grow more from the same land? Is there a technique available कि हम उसी amount of land से ज़्यादा number of crops grow कर सके हैं? तो let us उसके लिए हमें पहले समझना पड़ा होगा कि currently पालमपुर में क्या क्या crops grow होते हैं. So currently in rainy season kharif crops are grown, for example jawar and bajra. Okay, अभी rainy season में वहाँ kharif crops grow होते हैं. When in the winter season the farmers grow rabi crops, for example wheat. Simultaneously some farmers they grow potato on their fields. Okay, then there is a part of land which is completely dedicated for producing sugarcane and it is harvested once a year. Now why this sugarcane is produced and why there is a land dedicated? Because this sugarcane, from the sugarcane jaggery is produced and sold to the nearby villages and towns, and that's how money is earned. Hence a part of land is totally dedicated for sugarcane. It's okay, it is sold as jaggery to traders in Shahpur. Now yes, so apart from the current scenario, we found out that there are two methods by which we can grow more crops from the same land. What are those two methods? Pehla, multiple cropping can be done, or second, modern farming methods can be applied. Multiple cropping का ये मतलब होता है to grow more than one crops on the same amount of land is multiple cropping. एक ही लैंड पर एक क्रॉप से ज़्यादा दो क्रॉप से ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो करना की टेक्निक को मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं. दूसरा मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स. ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स हम पहले यूज़ करते थे जहाँ पे फार्मर्स जो है बहुत मशीनरीज या इक्विपमेंट्स का यूज़ नहीं करते फॉर सोइंग द लैंड, फॉर टिलिंग द लैंड. सेकेंडली वो काउ डंग या नेचुरल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स यूज़ नहीं करते, पेस्टिसाइड्स यूज़ नहीं करते. तो ये ट्रेडिशनल मेथड्स यूज़ होते थे. ओके, बट अगर आप मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स अप्लाई करोगे जिससे कि आप हाई ईल्ड वैरायटी की सीड्स लोगे. हाई ईल्ड वैरायटी यानी कि ऐसी सीड्स जो ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्रॉप्स देती हैं. और सेकेंडली आप केमिकल फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हो तो उससे आपकी ईल्ड यानी कि नंबर ऑफ़ क्रॉप्स विच इज़ ग्रोन, ओके, ये ईल्ड जो है इंक्रीज हो सकती है. सो टू वेज आर मल्टीपल क्रॉपिंग एंड मॉडर्न farming. Now let us see how multiple cropping is possible in Palampur and how modern farming is possible in Palampur, or are they actually using it?
So multiple cropping, I just told you to grow more than one crop on a single piece of land is multiple cropping. But in Palampur already two crops are grown. I told you kharif season and rabi season mein, plus potato is also grown, plus sugarcane is also grown. That means already people are growing four types of crops in the area of in the land of Palampur. Now this brings me to an important question. How is it possible that they are able to maintain four crops? Because जनरली हम कहते हैं ना, एक टाइप का क्रॉप अगर आप एक फील्ड पे ग्रो करो उसके बाद में फील्ड की फर्टिलिटी इफेक्ट होती है, या फिर जितना क्रॉप्स आप ग्रो करोगे उतना आपको इरीगेशन या उतनी पानी की ज़रूरत होती है. जनरली उतना इरीगेशन हर जगह हर विलेजेस में डेवलप्ड नहीं होता. बट रिमेंबर वी लर्न अबाउट पालमपुर दैट इन पालमपुर देर इज़ वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरीगेशन. सो दैट इज़ वाई दे आर एबल टू मेंटेन like 3 to 4 crops in Palampur. So they are generally doing it. Okay. Then modern farming methods. Modern farming methods is important to increase the yield. I just told you yield का मतलब क्या होता है, crop produced on a given piece of land during a single season. इसको आप अपन yield बोलते हैं. So yield बढ़ाने के लिए अब इसमें हम क्या क्या करते हैं. So we use not the traditional seeds, we use high yield variety of seeds. High yield variety of seeds मतलब कि ऐसी seeds जो ज़्यादा number of crops देती हैं. Now this requires plenty of water. That means you need a well developed irrigation system. This needs fertilizers, chemical fertilizers, not the manures. Okay, so you need to purchase chemical fertilizers. This needs pesticides so that the crops which are grown, because the crops are of good quality, so there is a scope that they can be infected. Okay, so we need to spray pesticides. This again requires a lot of money. Yield increase. Now when you will apply all these three things, then the yield will increase more than the double. मतलब अगर आपका let's say 130 हर्ट्ज के बराबर में आपका अगर 130 हेक्टेयर ऑफ लैंड में अगर आपका लेट्स से ईल्ड हो रहा था तो वो जस्ट डबल हो जाएगा. ओके, बट इन सारी चीज़ों के लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है. मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स के लिए यू रिक्वायर अ लॉट ऑफ वर्किंग कैपिटल. दैट मीन्स यू रिक्वायर अ लॉट ऑफ मनी. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इफ़ यू वांट टू अप्लाई मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स. सो इट सीम्स दैट पालमपुर विलेज people are already doing modern farming methods, but how many are doing, that is something which we will come to know about it at a later stage. Now this brings me two important questions for you, that you have to give me at least 3 differences between traditional farming and modern farming method, and you have to tell me difference between multiple cropping and मॉडर्न फार्मिंग मेथड. मल्टीपल क्रॉपिंग और मॉडर्न फार्मिंग मेथड में क्या डिफरेंस है, एंड ट्रेडिशनल फार्मिंग एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड में क्या डिफरेंस है. ओके, नाउ थर्ड थिंग. नाउ मॉडर्न फार्मिंग मेथड से हो गया, मल्टीपल क्रॉपिंग भी हो गया. अब दिस इज़ द थर्ड थिंग विच वी शुड नो अबाउट पालमपुर. अगर हम ये सारी चीज़ें करते हैं, सो विल द लैंड ऑफ पालमपुर सस्टेन, बिकॉज एज यू ऑलरेडी नो द लैंड इज़ फिक्स्ड इन पालमपुर. So see, land is a natural resource. Okay, now when we apply modern farming methods on any piece of land, that means a natural resource gets overused. वो natural resource बहुत ज़्यादा overuse होने लगती है. इससे क्या होता है, उसकी soil fertility loss होती है. soil fertility loss होगी, इसका मतलब कि आप जितनी भी high yield variety seeds लेकर आ जाओ, उसका growth तो affect होगा ही होगा. इसका मतलब कि आपको और ज़्यादा fertilizers डालने होंगे. इसका मतलब कि आप जितने ज़्यादा fertilizers डालोगे उतना ही आपको इरीगेशन की ज़रूरत पड़ेगी. जितना ज़्यादा इरीगेशन का ज़रूरत पड़ेगा, मतलब लेट्स से कि ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड में फार्मर्स जनरली रेन्स पर भी डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर इरीगेशन. बट इसमें मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में आपको रेन्स के ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं हो सकते. यू हैव टू डेवलप योर ओन सिस्टम ऑफ इरीगेशन. दैट मीन्स दैट विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ वाटर. दैट मीन्स दैट ब्रिंग्स यू डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल बिलो द ग्राउंड. ग्राउंड के नीचे का पानी का लेवल धीरे धीरे नीचे ख़त्म होता जाता है. Or because you have to keep doing your own irrigation system, you have to keep doing your adding fertilizers, chemical fertilizers and pesticides, so that means your cost of cultivation is rising very fastly in modern farming methods, and these are affecting your land slowly and gradually. because आप कब तक fertilizers यूज़ करते जाओगे ना, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में जब आप ओवर यूज़ करने लगोगे लैंड को, तो जितना भी fertilizers आप ऐड करो, the land will lose its soil fertility and it is gonna affect the crops and the yields very badly. And we already know the amount of land is fixed in
Palampur. So this is one important thing which we have to think, or which we have to keep in our mind, that development often leads us to disaster, or you can say overdevelopment often leads us to disaster. Now there are three other things which you should know about farming in Palampur, but I will bring you those three things in the next session. For now, I'll be giving you some of the questions which you will have to answer.